ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಮಹಾಪುರಾಣಂ முதலாவது ஸ்கந்தம் அத்தியாயம் 9. ஸ்ரீமத் பாகவத மகாபுராணம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கந்தா சாப்டர் 9. பீஷ்மர் தர்மருக்கு அறநெறி பற்றி கூறுதல். பீஷ்ம ஸ்துதி. சூத உவாச்ச இதி பீத பிரஜாத்ரோஹாத் சர்வதர்ம விவித்சயா ததோ வினசனம் பிராகாத் यत्र देवव्रतोपतत् तदा ते भ्रातरः सर्वे सदश्वै स्वर्णभूषितैः अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यासधौम्याधयस्तथा भगवानपि विप्रर्षे रथेन सधनञ्जयः सधैर्यरोचत नृपः कुबेर इव गुह्यकैः दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवस्युतमिवामरं प्रणेमु पाण्डवा भीष्मं सानुगा सह चक्रिणा तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तमा राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुङ्गवं पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान् पादरायणः बृहदश्वो भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठ इन्द्रप्रमथस्त्रितोकृत् समदोषितः कक्षीवान् गौतमोऽत्रिश्च कौशिकोत सुदर्शनः अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरादाधयो मलाः शिष्यैरुपेता आजग्मुः कस्य भाङ्गिरसादयः तान् समेतान् महाभागान् उपलभ्य वसुत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देशकालविभागवित् कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हृदि स्तं पूजयामास माययोपातविग्रहं पाण्डुपुत्रानुपासीनान् परश्रयप्रेमसङ्घतान् अभ्याचष्टानुरागासैर् अन्धीभूतेन चक्षुषा अहो कष्टमहोन्यायं यद्यूयं धर्मनन्दनाः जीवितुं नार्हत क्लिष्टं विप्रधर्माच्युताश्रयाः संस्थिते तीरथे पाण्डौ पृथा बालप्रजावधूः युष्मत्कृते बहून् क्लेशान् प्राप्तातो कवती मुहुः सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यदः प्रियं सपालो यद्वशे लोको वायोरिव घनावलिः यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणिर्वृकोदरः कृष्णो स्त्रीगाण्डीवं चापं सुहृत्कृष्णस्ततो विपत् न ह्यस्य कर्हि चिद्राजन् पुमान् वेद विदित्सितं यद्विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि तस्मादिदं दैवतन्त्रं व्यवस्य भरतर्षभ तस्यानुविहितो नाथ पाहि प्रजाप्रभो एष वै भगवान् साक्षात् आद्यो नारायणः पुमान् मोहयन् मायया लोकं गूढश्चरति वृष्णिषु अस्यानुभावं भगवान् वेद गुह्यतमं शिवः देवर्षिर्नारद साक्षात् भगवान् कपिलो नृप यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमं
अखरो सचिवं दूतं सौहृदाधत सारथिं सर्वात्मनसमदृशो ह्यद्वयस्यानहङ्कृतेः तत्कृतं मतिवैषम्यं निरवध्यस्य न क्वचित् तथाप्येकान्तभक्तेषु पश्य भूपानुकम्पितम् यन्मे संस्त्यजत साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचायन्नाम कीर्तयन् त्यजन् कळेवरं योगी मुच्यते कामकर्मभिः स देवदेवो भगवान् प्रतीक्षताम् कळेवरं यावतीदं हि नोम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपदश्चतुर्भुजः सूत उवाच युधिष्ठिरस्तथा कर्ण्य शयानं शरपञ्जरे अपृच्छद्विविधान् धर्मान् ऋषीणां चानुशृण्वताम् पुरुषस्वभावविहितान् यथा वर्णं यथाश्रमं वैराग्यरागोपातिभ्याम् आम्नातो भयलक्षणान् दानधर्मान् राजधर्मान् मोक्षधर्मान् विभागसः स्त्रीधर्मान् भगवद्धर्मान् समासव्यास योगतः धर्मार्थकाममोक्षांश्च सहोपायान् यथा मुने नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित् धर्मं प्रवददस्तस्य स कालप्रत्युपस्थितः यो योगिनश्चन्दमृत्योर्वाञ्छितस्तुतरायणः तदोपसंहृत्य गिरः सहस्रनीर्विमुक्तसङ्गं मन आदिपूरुषे कृष्णे लसत्पीतपटये चतुर्भुजे पुरस्थिते मीलितदृग्व्यधारयत् विशुद्धया धारणया हुताशुभः तदीक्षयैवासुगतायुधव्यतः निवृत्तसर्वेन्द्रियवृत्तिविभ्रमस तुष्टावजन्यं विसृजन् जनार्दनम् श्रीभीष्म उवाच इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वतपुङ्गवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाहः त्रिभुवनगमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्भरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसकेरतिरस्तु मे नवध्या युदितुरघरजो विधूम्रविश्व कचलुलितश्रमवार्यलङ्कृतास्ये मम निशितशरैर्विभिद्यमान त्वचि विलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखिवचो निशम्य मध्ये निजपरयोर्बलयोरतं निवेश्य स्थितवति परसैनिकायुरक्ष्णा हृतवति पार्थसखे रतिर्ममास्तु व्यवहितपृतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवधात् विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिमहरदात्मविद्यया यश्चरणरतिपरमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञां ऋतमधिगर्तुमवप्लुतो रतस्तः धृतरथचरणोऽभ्ययाचलद्गुर्हरिरिव हन्तुमिभं
गतोत्तरीयः शितविशिखहतो विशीर्णदंशः क्षतजपरिप्लुत आतदायिनो मे प्रसभम् अभिससारमद्वथार्थम् स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः विजयरथकुटुम्ब आततोत्रे धृतहयरश्मिनितश्रिये क्षणीये भगवतिरतिरस्तु मे मुमूर्षोर्यमिह निरीक्ष्य हता गता सरूपम् ललितगतिविलासवल्गुहास प्रणयनिरीक्षणकल्पितोरुमानाः कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्ताः प्रकृतिमगन् किल यस्य गोभवद्वः मुनिगणनृपवर्यसङ्कुलेन्तः सदसि युधिष्ठिरराजसूय येषाम् अर्हणमुपपेदईक्षणीयो मम दृशिगोचर एष आविरात्मा क्षितिभरमवरोपितुं कुरूणां स्वसन इवासृजत क्षवंसवह्निं तमिममहमनुव्रतार्तिहाङ्गरीं हृदि परिरभ्य जहामि मर्त्यनीडम् तमिममहमजं शरीरबाजां हृदि दिष्टितमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकदार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहः सूत उवाच कृष्ण एवं भगवती मनोवाग्दृष्टिवृत्तिभिः आत्मन्यात्मानमावेश्य सोऽन्तःश्वास उपारमत् सम्पद्यमानामाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कळे सर्वे बभूवुस्ते दूष्णीं वयांसीव दिनात्यये तत्र दुन्दुभयो नेधुर्देवमानववाधिताः सशंसु साधवो राज्ञां कात्पेतु पुष्पवृष्टयः तस्य निर्हरणाधीनि सम्परेतस्य भार्गव युधिष्ठिरकारयित्वा मुहूर्तं दुःखितोऽभवत् तुष्टुवुर्मुनयो हृष्टा कृष्णं तद्गुह्य नामभिः ततस्ते कृष्णहृदया स्वाश्रमान् प्रययुः पुनः ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाह्वयं पितरं सान्त्वयामास गान्धारीं च तपस्विनीं पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभुः ஸ்ரீமத்பாகவத மகாபுராணம் முதலாவது ஸ்கந்தத்தில் 9வது அத்தியாயம் முற்றிற்று. கோபிகா ஜீவனஸ்மரணம் கோவிந்தா கோவிந்தா நாராயணா அகில குரு பகவன் நமஸ்தே.